नमस्ते दोस्तों, दीप टेक चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिफरेंट बैंक एग्जाम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, arithmetic logic unit and control sections have special purpose locations called option 1 registers, option 2 RAM, option 3 BIOS, option 4 IO, option 5 ROM। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 रजिस्टर। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU भी बोलते हैं और कंट्रोल सेक्शंस यानी कंट्रोल यूनिट में स्पेशल पर्पस लोकेशन है। उस स्पेशल पर्पस लोकेशन को रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है which are used to accept, store quickly and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 रजिस्टर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दी टाइप्स ऑफ इनपुट इंक्लूड ऑप्शन नंबर 1 डेटा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर 3 कमांड्स, ऑप्शन नंबर 4 यूजर रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ दिस। यह प्रश्न SBI क्लर्क एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डेटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स, यूजर रेस्पॉन्स, all of these are input to a computer system। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5 all of this। Now let's proceed to question number 3 and here it is। Question number 3, this component is required to process data into information and consists of integrated circuits IC। Option number 1 hard disk, option number 2 RAM, option number 3 CPU, option number 4 ROM, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस। यह प्रश्न SBI क्लर्क एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CPU। CPU जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर भी कह सकते हैं। CPU एरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो डेटा है उसे प्रोसेस करके मतलब वहां काम करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CPU। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर? ऑप्शन नंबर 1 CPM, ऑप्शन नंबर 2 DPI, ऑप्शन नंबर 3 PPM, ऑप्शन नंबर 4 BIT, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस। तो to count the speed of a printer, the unit used is dot per inch, DPI। bit नहीं है, it is a short form of binary digit and the smallest unit of data in a computer। CPM नहीं है क्योंकि CPM means character per minute या copies per minute। PPM है pages per minute, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 DPI। Now let's proceed to question number 5। Question number 5, which of these is a pointing and drop device? Option number 1 mouse, option number 2 scanner, option number 3 printer, option number 4 CD-ROM, option number 5 keyboard। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माउस। इसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस क्यों कहते हैं? माउस का एक पॉइंटर होते हैं जिससे हम कंप्यूटर स्क्रीन में पॉइंट करते हैं और किसी भी आइकॉन को होल्ड करके उस आइकॉन को ड्रैग करके किसी और लोकेशन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए माउस को हम पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 माउस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 mouse। Now let's proceed to question number 6 and here it is। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग पेड कोचिंग अफोर्ड न कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, a disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is option number 1 memory only, option number 2 write only, option number 3 read only, option number 4 run only, option number 5 non changeable। तो वो डिस्क का कंटेंट जिसे मैन्युफैक्चरिंग के समय रिकॉर्ड करता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 रीड ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रीड ओनली। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 7, कैश एंड मेन मेमोरी will not be able to hold their contents when the power is off. They are option number 1 dynamic, option number 2 static, option number 3 volatile, option number 4 non volatile, option number 5 faulty। जब हम कंप्यूटर में डेटा को सेव करते हैं, डेटा सेकेंडरी मेमोरी में मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं और हार्ड डिस्क वोलेटाइल नहीं है। और जब हम डेटा को स्टोर नहीं करते तो डेटा मेन मेमोरी में रहते हैं और मेन मेमोरी और कैश मेमोरी वोलेटाइल होते हैं। मतलब अगर हम डेटा को सेव नहीं करते, डेटा मेन मेमोरी या कैश मेमोरी में रहते हैं और जब बिजली चली जाती है तो कैश और मेन मेमोरी में जो भी डेटा है सभी साफ हो जाते हैं। मतलब जब बिजली चली जाती है तो कैश और मेन मेमोरी डेटा को होल्ड नहीं कर सकते, मतलब कैश और मेन मेमोरी वोलेटाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 वोलेटाइल। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 8, एंड मेनू इज अवेलेबल एट व्हिच बटन? Option number 1 end, option number 2 start, option number 3 turn off, option number 4 restart, option number 5 reboot। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन ही है जहां एंड मेनू है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर एंड हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 9, in order to include pictures, data type must be option number 1 OLE, option number 2 hyperlink, option number 3 yes no, option number 4 picture, option number 5 none of this। ये RBI PO में आया हुआ है। OLE का फुल फॉर्म है, OLE का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। Object linking and embedding is a way to insert an external file like a picture into another application। So, in order to include picture, data type must be option 1 OLE। Now let's proceed to question number 10 and here it is। Question number 10, the maximum zoom percentage in MS PowerPoint is option number 1 100%, option number 2 200%, option number 3 400%, option number 4 500%, option number 5 none of this। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 400%। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, which one is the example of spreadsheet package? Option number 1 physical, option number 2 unity, option number 3 ada, option number 4 snowball, option number 5 none of this। तो example of spreadsheet package is snowball। तो correct answer is option number 4 snowball। Now let's proceed to question number 12 and here it is। Question number 12, which of the following represents 1 billion characters? Option number 1 byte, option number 2 gigabyte, option number 3 kilobyte, option number 4 megabyte, option number 5 terabyte। Friends, 8 bits equal to 1 byte, 1 KB equal to 1024 bytes, or we can say 1000 bytes, 1 MB equal to 1024 KB, okay, or 1000 KB। मतलब 1000 into 1 KB equal to 10 to the power 3 byte, 1000 into 1000 equal to 10 to the power 6 byte, which is 1 million bytes।
Okay. Now 1 GB equal to 1024 MB. Okay. 1024 MB or 1000 MB. 1 MB equal to 10 to the power 6 bytes. Okay. Now 10 to the power 6 into 1000. Okay. Here 1000 MB, so 10 to the power 6 into 1000. Okay. Equal to 10 to the power 9. 10 to the power 9 equal to 1 billion bytes. Okay. Here 1 billion bytes mean 1 GB. So correct answer is option 2, 1 gigabyte. Now let's proceed to question number 13, and here it is. Question number 13. This means that the data contained in the database is accurate and reliable. Option number 1, data redundancy. Option number 2, data integrity. Option number 3, data reliability. Option number 4, data consistency. Option number 5, none of this. Here, correct answer is option number 2, data integrity. Data integrity एक concept और process है that ensures the accuracy, completeness, consistency, reliable, and validity of an organization's data. It also sees that data is kept safe throughout its entire life cycle. So the correct answer is option number 2, data integrity. Now let's proceed to question number 14, and here it is. दोस्तों, ऐसे वीडियो में एवरी ऑल्टरनेट ऑलमोस्ट डालता रहूंगा, तो वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी. Now let's proceed to question number 14. The smallest unit of information about a record in a database is called a. Option number 1, cell. Option number 2, field. Option number 3, record. Option number 4, query. Option number 5, none of this. डेटाबेस में जितने भी इंफॉर्मेशन है टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं जहां रिकॉर्ड्स और फील्ड्स होते हैं. मतलब इन ए डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स. ए रिकॉर्ड इज ए कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए पार्टिकुलर आइटम. रिकॉर्ड एक पार्टिकुलर आइटम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और फील्ड उस रिकॉर्ड का एक सिंगल इंफॉर्मेशन है. मतलब हम कह सकते हैं फील्ड उस रिकॉर्ड में रखे गए एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो हम कह सकते हैं एक रिकॉर्ड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में वो फील्ड है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, फील्ड. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 15, एंड हियर इट इज. क्वेश्चन नंबर 15. These are attempts by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity. Option number 1, phishing tricks. Option number 2, computer viruses. Option number 3, spyware scams. Option number 4, viruses. Option number 5, phishing scams. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, phishing tricks. Phishing is a malicious technique or type of social engineering attack often used to steal user data including login credentials and credit card numbers. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिशिंग ट्रिक्स. दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, जो उम्मीद है आपको आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं, प्लीज. दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिफरेंट बैंक एग्जाम्स में पूछे गए 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं अगर आपको चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डिपटेक के साथ. जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते.